Good morning, students. In last session, we have completed indirect method of cash flow statement, if you remember, and if you practiced it. Before starting any session, first we will quickly revise two approaches. Traditional approach and modern approach, our basic rules of accounts are divided in two parts. Traditional approach, again, golden rules of accounts divided in three parts: personal, real, nominal account. Personal account, due relationship, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, and creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out, and nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Asset shows debit balance, liability shows credit balance, expenses debit, income credit, capital account credit balance. As you are aware about uh, financial statements pro forma, or financial statement pro forma is equity and liability, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट. एक्चुअली ये दो हेड्स यूज के नहीं है. नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. Asset side, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances. Other non-current assets, current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, and then other current assets. Accounting standards we have completed in the first inning. That is the accounting standard 1, disclosure of accounting policy, S2, inventory valuation, 3, cash flow statement, 4, contingencies and events occurring after balance sheet date, 5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy, 6 is removed, 7 is construction contract, 8 is removed, 9 is revenue recognition, 10 is property, plant and equipment, 11 is effects of changes in foreign exchange rates, 12 is accounting for government grant, 13 is accounting for investment, 14 is accounting for amalgamation, 15 is employee benefits, 16 is borrowing cost, 17 segment reporting, 18 related party disclosures, 19 leases, 20 earning per share, 21 consolidated financial statement, 22 accounting for taxes on income, 23 accounting for investment in association consolidated financial statement, 24 discontinuing operation, 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 investment in joint venture in consolidated financial statement, 28 that is a financial interest in joint venture actually, 28 is impairment of assets, 29 provision contingent liability and contingent assets. I hope you have completed your homework. ठीक है. फिर उसके बाद हमने कुछ एंट्रीज पूछी थी मैंने आपको. एंट्रीज, यस, नाउ इट्स योर टाइम. Raise your hand. We have completed this revision only in 3 minutes 33 seconds. Okay, so all of you have understood these entries. I know बहुत कोल्ड चल रहा है. Yes, I'm in office in Pune. Weather is very cold. It's very difficult to wake up at 7 o'clock, but better, it's your responsibility. Now exams are only we left only 4 months and you need proper revision. So friends, it's request to all of you, जल्दी से सुबह उठ जाने का बेटा और फटाफट रिवीजन करने की. एंड रेज योर हैंड दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू आंसर इन बेसिक एंट्रीज. यस, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम एंट्रीज. हु वांट्स टू टेक इट एज अ चैलेंज? यस, रश्मि जी. चलो रश्मि जी. अदर स्टूडेंट्स रेज योर हैंड फटाफट. हाँ जी. एक्सपेंस पेएबल. Expense to expense payable. आपके दिमाग में पहले क्या आता है? एक्सपेंस पेएबल. Expense is the loss and the expense payable is liability जी. नहीं, एक्सपेंस पेएबल लाइबिलिटी आना चाहिए. एक्सपेंस इज देयर, एक्सपेंस पेएबल इज अ लाइबिलिटी. बस ये ध्यान में आना चाहिए. एसेट शोज विच बैलेंस? Debit, लाइबिलिटी. credit, एक्सपेंसेस. debit, इनकम. credit, कैपिटल. credit. वेरी गुड. व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट ऑफ रियल अकाउंट? Real account debit what comes in, credit what goes out. पर्सनल अकाउंट. Debit due relationship, debit the debtor, credit the receiver. क्रेडिट द क्रेडिटर. Debit the debtor, credit the creditors, or a settlement relationship. Debtor becomes receive. Debtor becomes giver and creditor become receiver. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Yes. नॉमिनल अकाउंट. All loss and expenses are debit and the income once again are credits. वेरी गुड बेटा. बैड डेट्स एंट्री. बैड डेट्स हमारा लॉस है और तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स को हम कैंसिल करेंगे तो इसलिए
debtors credit. Bad debt Are student. you direct entry student or foundation student? Foundation students. ओके ओके ठीक है. डिस्काउंट अलाउड. This creditors account debit मतलब डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, सॉरी लॉस है. लॉस है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड डेटर को हम कैंसिल करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट. डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम है, तो वो क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स को कैंसिल करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके. एक गाइडेंस नोट आया है फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. वही चेक कर रहा था मैं. ठीक है. आई विल चेक इट आउट आफ्टरवर्ड्स. वेरी गुड. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमारा लॉस एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसल्ड. Then a asset is discarded or sales. Sold, discard or scrapped. Okay, what will be the entry? Accumulated depreciation account debit to asset account. Very good. Have you cleared your foundation? Yes, sir. uh, कुछ डिफिकल्टी गया था आपको क्लियर करते टाइम? No, sir. इजीली हो गया. Yes, sir. अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप फाउंडेशन में? 10 hour, 10-12 hours उस टाइम भी. वेरी गुड. कहाँ से हो आप? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ पर दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ. ओके. बहुत बढ़िया बेटा रश्मि. थैंक यू सर. आप फाउंडेशन से मेरे साथ जुड़े हुए हो? यस सर, जूरी तो हूँ पर सर आप बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे मेरे को, मतलब लगता था वो समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरे को सही लगा, फिर देखते देखते मैं रिकॉर्डेड देखती थी हाँ. तो लेक्चर. आपको डर लगता था? बहुत ज्यादा मैं बोलती थी सर ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है. मैं अपने घर में भी बोलती थी कि सर कैसे पढ़ाते हैं, मेरे से नहीं होगा इस सर से पढ़ाई. मतलब मैं देखती थी आपकी आपकी पढ़ाई, पर मैं कभी वो यूट्यूब से ही देखती थी. फिर मैं इंटर में वो आया, मतलब अब सही लगता है, अच्छे से अब स्ट्रिक्ट नहीं लगते हैं आप. चलो अच्छी बात है. स्ट्रिक्ट इसलिए फाउंडेशन में होना ही पड़ता है ताकि आप पढ़ाई करो अच्छे से. ओके. ठीक है. सर थैंक यू सर. चलो बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया आंसर्स दिए आपने. यस. दिनेश कुमार. Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग. दिनेश कुमार, हैव यू डन योर illustration number 6 indirect method? Illustration number 6, sir. Yes, sir. Illustration 6 Yes, sir. Yes, sir. I have completed. you have completed. Yes, sir. Yes. Can you tell me timings required for completion? Uh, since it's my How first many time trying, times? How many times you uh, solved it? yes, sir. I've tried at least 3 times, I think so, sir. Yes, sir. 2 times in rough work and 1 time in fair work, sir. Okay, very good. Now you are very clear with these proformas. Yes, sir. I'm good with these things. And I got some doubts in the first time when I tried to solve in rough work. But Hmm. after solving 2 to 3 times, I've got clear right now, sir. Very good. Can you tell me some proformas, leisure proformas of illustration 6? Do not open your notebook. Yes, sir. Sure. Hmm. I'm going to open plant and machinery account over here. Okay, sir. So, how to recall this proforma? I do not want to open your book. Huh?
Just recall it. Okay, sir. At first, we'd like to add the opening balance and closing balance. No, first we start with debit plus credit minus, correct? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Since plant and machinery is an asset, debtors is plus and creditors is minus. Hmm. And at first, we start with opening balance and closing balance. Okay, so to balance brought down, by balance carried down. Hmm. Yes, sir. Then, And uh, and then there is a purchase of plant and hmm. assets, Hmm. and we will add with cash to cash or bank. Hmm. And then there is a loss on plant and machinery, No, loss on if I sale of sell plant. it, first I will cancel accumulated depreciation, correct? Yes, sir. Yes, sir. Then buy cash Yes, and sir. buy And loss. yes, sir. And by If loss. you take a total of this, it will give you cost of the asset. Yes, sir. Okay. So buy accumulated depreciation, buy Yes, sir. cash and buy And by loss. loss. Depreciation we never record in plant and machinery, Lahari, if we open accumulated depreciation account. Yes. So can you tell me, Dinesh Kumar, if I'm going to open accumulated depreciation account, should I record depreciation in plant and machinery account or should I record it in accumulated depreciation account? No, sir. Since it has a two times, it's like a two-way effect. We have to since we have credited accumulated depreciation in plant and machinery, Mhm. then we have to debit the same thing in accumulated depreciation accounts. Okay. So entry is depreciation to accumulated depreciation. And why accumulated depreciation account is opened? Yes, Dinesh Kumar. Yes, sir. Why accumulated Since depreciation account sir, is open? yes, sir. We'd like to know the original depreciation Oh, value, yes. so we are Cost of the opening. asset. We want to show our asset at cost. Yes, sir. If I want to show my asset at cost, I will open Accumulated accumulated depreciation. depreciation account. Correct? Yes. Yes, sir. Yes. Chalo. Let now tell me what is the pro forma of accumulated depreciation. The pro forma is since accumulated depreciation is a liability, credit is plus and debit is minus, sir. No, it's not a liability. It is a provision Yes. against asset. Okay, sir. Okay. It is not Yes. liability. Huh? Okay, sir. Hmm. And same like plant and machinery, we are going with opening balance and closing balance. Okay. Hmm. Then Next. since the plant is depreciated, we'd like to add plant in the debit Where? side of the in When debit we side, are sir. selling our plant, Yes, sir. then we are going to cancel this accumulated depreciation. So we are writing in a debit Huh. side, sir. When we are going to sell it. Yes, sir. And here it is by The depreciation. depreciation. Yes, sir. When you pass entry of depreciation, your accumulated depreciation balance will get increased. Okay, sir. Next, income tax account. Yes, sir. Income tax is a separate line of. Item in Yes, cash sir. flow statement. Therefore, we open account. Yes, sir. Hmm. For this, the since it is expense, so we are adding credit side as No. all expenses and Expenses. losses. All expenses and losses. So Debit debit side is plus plus. credit minus. Correct? Yes, Hmm. yes, sir. We will write to cash. And opening balance, we cannot write like buy balance brought down because it's Yes, a sir. It's nominal account. by payable Buy to payable payable to payable. to payable. And Yes, sir. balancing figure, we transfer it to P&L. profit and loss account. Yes, sir. This is called as accrual concept Accrual concept. and this is called as cash concept. Okay, sir. Correct? So buy payable to cash by P&L. Yes, sir. Next account we opened investment account. Instead of Yes. accumulated depreciation, everything is same, no? Yes, sir.
Only there is not loss, there is gain. So we have to write over here gain. Yes, sir. And there is no accumulated depreciation in investment account. Yes, sir. So it is only by cash. Uh-huh. Next, there is bond account. Yes, sir. Hmm. Bond is since bond is Liability. yes, sir. Since bond is Bond a is our liability, liability. add Okay. so we'll add credit side and we'll minus debit side. Hmm. Yes, sir. By balance, by opening balance and to closing balance. Hmm. I think there is, we issued it for plant and machinery, no? Bonds? We issued it for plant and machinery, Ah. And and we there is repaid it. 3,000. Yes, sir. We paid. We repaid the amount by half. I think so, sir. Hmm. We repaid it. So two Yes. cash. Yes, sir. Very good. This is how you have to revise your cash flow statement. When to open? Yes. Can you tell me how many effects for balance sheet while In doing balance, posting in cash flow statement? yes, sir. In cash flow statement, balance sheet adds one effect, sir. One effect. P&L account, P and L, since there is two kinds of methods. For one method, it is double. direct Yes, method, yes, sir. In direct method, it has a single single effect, effect, and and in indirect method we have indirect method, there is two double. Yes, effects. Yes, very good. And adjustment, it has two effects always. yes, sir. Very good, beta. Yes, sir. Sir, I have one doubt. Hmm. Uh, it's my UG note, and we have recorded. Working notes. Yes, sir. In no, sir. In my graduation time, I've calculated this sum. It is also my working notes, but there is like in income tax, we'll be calculating accrual concept by P&L, right, sir? Hmm. But in this worksheet, I've calculated in debit side, sir. The provision for taxations. No, provision for taxation is always having credit balance. Yes, sir. Sir, we have seen that balancing figure is two cash, right, sir? Because you open provision for taxation account, Yes, sir. so that is liability account you open. And when I open income tax account, it is expenditure what I'm talking about. You opened Okay. provision for taxation. I opened income tax account. So provision for taxation has credit balance. Okay, sir. It's like depreciation to accumulated depreciation. Depreciation which balance? Debit Deb- balance. And yes, accumulated depreciation, credit balance. So you yes. opened provision for Okay. income tax. I opened income tax. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. And that's why there is buy balance brought down, two balance carried down, two cash and by P&L. But provision never transferred to P&L. Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Because Yes. provision is always carried to balance sheet. So Okay, in sir. accumulated depreciation account also, if you see the pro forma, accumulated Yes, sir. depreciation by balance brought down, Two two balance balance car. carried down, Yes, sir. two plant Two. and machinery, Yes, sir. and by And the depreciation. depreciation. Yes, sir. So I transferred depreciation to profit and loss account. And this Oh, account is similar to provision for income tax. So provision for income tax by balance brought down, yes, sir. Two balance two carried balance down. carried down, Yes, sir. And and when two you tax. prepare two cash, Yes, sir. so instead of two About. plant and machinery, it is two cash because we are paying it. Yes, sir. By depreciation, instead of that, we are writing by P&L. But this is not logically correct. Okay, sir. Okay, because here we write by income tax. Oh, okay, sir. So instead of that, we open income tax account. If you open provision for taxation, you will get the same answer. Don't worry. Okay. Okay, sir. Provision Okay, is sir. also giving the same answer, and income tax will also give the same answer. See, only the difference is that provision is a credit balance and income tax has a debit balance. Debit balance. Okay, sir. Correct? Okay. Yes, And sir. normally Yes. in real life, what we are doing, we are transferring on very first day these entries.
So on very first day, we transfer these entries to income tax account. So in real life, what happens on 1st April, provision has credit balance, no? Yes, sir. So we transfer it. So provision for income tax account debit or income tax payable account debit. What is provision for income tax? It is income tax payable Yes, sir. to Income income tax. tax account. Income tax. Okay, sir. And on 31st March, we create provision. So to provision and income tax account is debited. So Yes, if sir. you see income tax pro forma, in income tax pro forma, this will be on the credit side because income tax is credited. Yes, sir. So by payable. And here on the closing side, we are writing to payable. And this is a Okay. logic of provision for income tax. And then income tax account to cash and by P&L. So we are writing by payable to payable Payable. Yes, sir. to cash by P&L because on 1st April, we normally in real life, what happens? We reverse the entry Okay, sir. on very first day. Whatever Oh, balances are there, for example, if salary is payable, what happens if salary is payable? Salary payable is showing credit balance, correct? So on yes, sir. 1st April, what will do? Salary payable account debit to salary Yeah. account. Okay, sir. And on 31st March, we open entry, we pass entry salary account debit to Yeah. salary Debit to payable. payable account. Yes, sir. And this is then what happens? Your payable balance is becoming zero Yes, sir. on 1st April. On 1st April. And on 31st March, your closing balance will get opened. Yes, And sir. now instead of passing entry in salary payable account, we pass Yes. entry only in salary account. Sal- So your salary account pro forma will look like this. Salary on 1st April by payable to to payable to cash yes, sir. and by P&L. IP and okay, sir. Okay. Yes, So sir. we are doing balances zero. Okay, sir. Easy? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are going to solve same question. How many of you have completed same question using direct method? Yes, just raise your hand. Today's session actually very important session. Rashmi, very good. Dinesh Kumar, Yes, sir. I like your confidence. Though you are direct entry student, but you are trying to learn each and every account, and it will be very easy for you because normally in account subject, in Yes, your sir. inter accounting, problem is that we have accounting standards, so you are not aware about basic rules of accounts, and you never applied it in the accounting standards. Okay, Yes, this sir. is a chapter where you are aware about this accounting part of the real personal nominal account, traditional approach, modern approach, because we have to prepare it. Yes, So sir. there is when I studied my inter level, at that Yes. time there were topics like non-profit organization, then we had a single entry system in intermediate. So that was pure accounting subject. Yes, Now sir. this is, accounting standard based subject. So many students are from direct entry. They are not aware about this accrual concept versus cash concept due to very few chapters in your syllabus. Yes, sir. Okay. But if you ask Rashmi, why she knows everything, because at foundation level they already studied all these topics. Yes, sir. Okay, so for them it is very easy. If you see Rashmi's performance, uh, today she answered very well, every entry she passed correctly, and you are also doing it, but it will take some time. So what is the normally what I will suggest you only open some ledger accounts, do Yes, sir. revisions, randomly you recall any pro forma of income tax account or equity share capital account or bonds account or plant and machinery account. See, there are normally same adjustments. Okay, institute will ask you same adjustment, only there is a standard pro forma of solving this question. And I hope now cash flow statement is very easy for you. Yes, sir. Now you are aware about each and every ledger pro forma.
So Yes. it is, if you have any doubt in any account, you can ask me. Yes, sir. And other students, again and again, I am telling you, कि please be confident, please answer it in the class. If you answer ledger pro forma, now you can see Dinesh Kumar is answering for, I think he is answering, in first inning he never answered when I started my accounting standard. But in second, means for example, when we started with cash flow statement, he answered everything. Now he is clear with all concepts. Dinesh Kumar, are you finding difference after answering it in the class? Yes, sir. Definitely, sir. I thought it's like since it has many provisions in a cash flow statement, it's like I don't even know about two-way entries like that. But right now, I'm finding it's very easy for me to answer in this class. That is very important. So I'm not here to tell you how to solve this, how to solve nahi, what exactly you have to write it in your notebook. No, I'm just clearing your all doubts. And the important point is that after the class, it's your responsibility to finish with your homework. So have you done your homework? Have you fair Yes. in fair notebook? Have you written all these answers? Yes, sir. Yes, sir. I've written, sir. Okay, very good. Chalo. So let's start with the direct method. Prakriti will answer now. Yes, Yes, sir. Dinesh Thank you, Kumar, sir. thank you. Yes. Good morning, sir. Good morning. चलिए प्रकृति जी, we are going to solve it by direct method. Yes, sir. Okay, so in the indirect method we have given profit and loss account two effects, correct? Yes, sir. Profit and loss account, have I considered sales in indirect method? No, sir. No. Why? Because indirect method starts with net profit, Yes, sir. then you will get, Gross profit. huh? Oh, What are you doing, beta? From net profit, first step is to elimination round. You yes, sir. forgot everything. No, sir. No, sir. Sorry. It is called as operating profit before working capital changes. Yes, I told it like operating accrued profit. And then we do working capital changes. yes, Then sir. we get operating cash profit. Yes, sir. आपने रिवाइज नहीं किया ना, सच्ची बताइए. No, sir. हाँ, No, sir. रिवाइज नहीं किया मैंने. आपने फेयर नोटबुक में भी नहीं किया ये सॉल्व. नो सर, मैं फेयर नोटबुक में तो किया था, पर मुझे ये याद नहीं रहा. वैसे तो मैंने फर्स्ट डे ही रिवाइज कर लिया था, पर मैं भूल गई थी. इसको भूले तो कैसे चलेगा, ये हार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड है. यस सर. इसको भूल ही नहीं सकते बेटा. ये हार्ट है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का. यस सर. चलो कोई बात नहीं. अभी डायरेक्ट मेथड में adjustments are same, but now in direct method, now in space direct method, I am talking about direct method. यस सर. Trading and P&L account has one effect. कितना effect देना है? वन इफेक्ट. Only one effect you have to give यस सर. for trading and P&L account. Balance sheet will solve it in the same way. यस सर. Only one effect. And adjustment has two effects. यस सर. Adjustment always has टू two इफेक्ट. effects. ठीक है बेटा. यस सर. चलो. सो अभी आपको मुझे बताना है. Here working capital changes. What is the formula of working capital changes? What is working capital, beta? How to calculate working capital? Prakruti, यस सर. how to calculate working capital in financial management? Have you done your financial management chapter, working capital? नो सर, मैंने उसके लेक्चर्स नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं लास्ट में ज्वाइन करी थी, तो फिर मेरा
हो नहीं पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। परसों ही मैंने बताया ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। यस सर। भूल गए? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। यस सर। ओके, इफ करंट एसेट इंक्रीजेस, करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो। थिंक प्रॉपरली। एसेट इंक्रीज किया तो आपने खरीदा या बेचा? खरीदा। खरीदा तो आउटफ्लो होगा क्या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। हाँ, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। एंड करंट एसेट डिक्रीजेस, करंट लाइबिलिटी इंक्रीजेस, तो इनफ्लो। इनफ्लो। But we do it in indirect method. Working capital changes, increase or decrease in debtors and creditors. Correct है? यस सर, दैट इज। हाँ, but here we will open these accounts. Direct method में we won't consider directly working capital changes. Direct method में we open these accounts. For example, sales. Now tell me, सेल से रिलेटेड विच करंट एसेट इज, अच्छा, सेल किया तो कौन सा करंट अकाउंट ओपन होना चाहिए? सेल। सेल सेल अकाउंट। से रिलेटेड करंट एसेट्स कौन सा है इसमें से? सेल्स रिलेटेड ट्रेड। प्लांट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल है या कैश है? सर। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। सो वी विल ओपन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। यस सर। विच अकाउंट? ट्रेड सेल। ओके, तो सेल्स अकाउंट वी पोस्ट इट इन द ट्रेड ट्रेड। रिसीवेबल अकाउंट। यस सर। COGS, cost of goods sold. ग्रॉस प्रॉफिट सर। No. नो। Which current asset is related? Inventory, trade receivable, cash, prepaid expense, share capital, reserve surplus, bonds, trade payable, outstanding liability or income tax payable. सर शेयर कैपिटल। Cost of goods sold से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और शेयर कैपिटल का क्या संबंध होगा बेटा? What is the relation between cost of goods sold and share capital? Cost of goods sold. Why share capital? What is cost of goods sold? How much goods you purchase, यस सर। what is the opening stock for you, and what is the closing stock for you, and that will give you sold. So there are two accounts related to this. One is inventory and second one is creditors. There are two related accounts in direct method. यस सर। Understood? यस सर। सेल्स से रिलेटेड कौन सा अकाउंट था? ट्रेड रिसीवेबल। सीओजेस से रिलेटेड इन्वेंटरी अकाउंट एंड ट्रेड पेबल अकाउंट. यस। ओके, यस सर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कौन सा अकाउंट ओपन होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लांट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के बाद इन्वेस्टमेंट था पहले, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बॉन्ड्स, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेबल. कौन सा रिलेटेड अकाउंट होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। बोलिए, इसमें से कौन से अकाउंट लग रहे हैं आपको? आदिश्री सिंह, प्लांट. वाई बेटा प्लांट? नो, इट्स प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. अंडरस्टूड? यस सर। प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. यस सर। नाउ इट्स इजी. यस सर। तो कौन से अकाउंट आपको ओपन करने हैं? इंस्टेड ऑफ आउट। इन्वेंटरी आई विल ओपन ट्रेडिंग अकाउंट. यस सर।
Okay. Yes, sir. Trade receivable I will open. Prepaid expenses and outstanding liability I will open in expense account. Yes, sir. And share capital bonds already star mark the. Okay. So what is the new technique of direct method? Direct method में we open current assets and current liabilities account. We open Current current assets and current li current liability account. That is the basic difference. Got the concept? चलो रब पेजेस लीजिए. लिखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Yes, sir. टोटल ऑफ दिस थ्री क्या होना चाहिए बेटा? प्रकृति, टोटल ऑफ दिस थ्री कितना होना चाहिए? कैश का डिफरेंस होना चाहिए ना? ये Yes, बताया sir. था ना मैंने. Yes, sir. कितना डिफरेंस था कैश का? टेक कैलसी. बोलिए ना बेटा जल्दी जल्दी. प्रकृति पूरा इंडिया देख रहा है, इतना स्लो नहीं कर सकते हम लोग. Sorry, डिफरेंस sir. बोलने में दिक्कत आ रही क्या आपको? कैलसी भी नहीं लेके बैठे क्या आप? बैठे हैं. आप बोलने वाले हो क्या डिफरेंस? Yes, sir. बोले ना. चलो ठीक है प्रकृति, आप बाद में बात कीजिए, कल वगैरह बोलना आप. ठीक है. No, sir. Cash difference 175 lakh. कैश डिफरेंस 175. 46 और 15 का तो क्या बोल रहे हो, आप ही को पता भाई. मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है आपके दिमाग में. 175 कहाँ से आया? 46 और 15 का डिफरेंस है तो Sorry, sir. 175 कहाँ से लिया आपने? Sir, 31,000. आप क्या कर क्या रहे हो प्रकृति जी आज? आपकी इच्छा नहीं है क्या पढ़ने की? Sir, है. फिर आपने कौन सा डिफरेंस लिया 175? आप बताइए तो सही कौन सा डिफरेंस लिया. ये हाउ सर यू मैंने गॉट 175? सर मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया था, वो मैंने दूसरा अमाउंट वो कर दिया था, इसलिए. अपने सॉरी. प्लांट एंड मशीनरी का ले लिया शायद से. यस सर. माय मिस्टेक. सॉरी सर. आपका ध्यान ही नहीं है आज, मुझे तो लग रहा है. दो चार बार मैंने बोला ठीक है, एक बार याद करना है. सी आई कैन अंडरस्टैंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सपोज आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, तो क्या करेंगे ना? इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एट होम, if you are not doing your proper study, see, we people are there to show you direction. We are going to give you only direction. We are not going to tell you कि exactly ऐसा स्पून फीडिंग नहीं होता है फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड जैसे. यस सर. अभी आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा. यस सर. अभी आपको मैं 5 मिनट से बता रहा हूं कि ये अकाउंट ओपन करने हैं, ये इससे रिलेटेड ये अकाउंट होगा. यू हैव टू improve your ability of understanding. It's not like कि we are doing CA course. We have to understand client के जो books होंगे. We have to understand it quickly. We cannot say him कि wait for some time. फिर मैं देखता हूँ. उसको तुरंत जवाब देना है हमें. यस सर. And please, this is not very difficult study. यस सर. पहले तो है ना, आप इसको एग्जाम एंगल से देखना बंद कर दो. आप इसको रियल लाइफ के बेसिक थिंग्स है. सेल्स से रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल, डेटा से पैसा आने वाला है, सेल्स रिलेटेड है. सीओजीएस इन्वेंटरी, सीओजीएस गुड्स कब बेचोगे? इफ आई हैव ओपनिंग स्टॉक, इफ आई हैव परचेसेस. यस सर. ट्रेड पेएबल, बिकॉज यू परचेस समथिंग तो यू हैव टू पे हिम.
operating expenses. It might be prepaid, it might be payable. This is very simple. Yes, sir. In indirect method, we have to start from net profit. From net profit, you will shift to operating accrued profit. What we are doing, we are calculating operating cash profit. Yes, sir. And all these things we are doing for the operating cash profit. Yes, sir. और आपने यदि इसको लॉजिकली नहीं सॉल्व किया ना, कुछ मतलब ही नहीं बनता है. आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Yes, sir. और मैं चैलेंज देके बोलता हूं, पूरे इंडिया में Yes, sir. ये इतना आपको कोई डिटेल में नहीं बताएगा. दैट इज माई चैलेंज. Yes, sir. फिर भी आपको आंसर्स नहीं देने तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट. यू आर आंसरिंग प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस एज अ कैश बैलेंस, तो मैं क्या बोलूं उसमें. Sorry, sir. ऐसा नहीं होता है प्राकृति. थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बताइए पढ़ाई में. चलो ठीक है. Yes, 31,000 will be the difference, and that Okay. will be total. Attempt जाता है ना जब लाइफ में, Yes, sir. मैं लिख के देता हूं आपको कि बाद में जो बुरा लगेगा. एंड दिस इज दी, हाँ, ओनली वन थिंग आई लाइक अबाउट यू, कि आपने कॉन्फिडेंटली आके आंसर देने की कोशिश की. Yes, sir. अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू फेस दिस थिंग. एक Because दो बार आपको लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर yes, sir. आपने आंसर देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपने आप. Yes, sir. ठीक ठीक है. Thank वेरी. मैं इससे बहुत डरती थी, मैं किसी भी टीचर से ऐसे बात नहीं कर पाती थी. हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ बैलेंस शीट. हाँ, प्लांट अकाउंट ओपन और नॉट ओपन. Open, sir. ओपन. Yes, sir. चलो, करो ओपन अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी. Which balance? I'm not going to write it today. All balances. Now you are aware about this. I'm not going to write two balance brought down and buy balance cut down. Only amount I will write. Okay? Yes, sir. हाँ. So कितना लिखो amount? Uh, Which side? sir, debit side 5 lakh. 5,000. फटाफट बोलिए. Yes, sir. 5. एंड क्रेडिट साइड 7,15,000. हैव यू रिटर्न? आप भी लिखो मेरे साथ. Okay, sir. 7 लाइंस का लिखो. प्लांट एंड मशीनरी. सेकंड अकाउंट Second account. उसी के नीचे लास्ट नेक्स्ट वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. फटाफट कीजिए, Yes, डोंट sir. वेस्ट टाइम. Share capital, sir. अरे अभी लाइन से चलिए ना. अभी बीच में से शेयर कैपिटल कहाँ से आया? Oh, sorry, sir. अभी इधर क्वेश्चन है, अवेलेबल है, प्लांट है, एडी है. लाइन से चलिए ना. Yes, sir. मतलब मन में आए वैसे अकाउंट बनाने के आपने को. एक तो पहली चीज, यू फोकस ओनली हियर. यू डू नॉट ओपन एनी यूर बुक. Okay. यू फोकस ओनली ऑन स्क्रीन. Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट अकाउंट. चलिए, प्राकृति जी रहने दीजिए आज के दिन. दूसरे स्टूडेंट को बोलते टाइम आप देख लेना. Yes, आप लाइन से जा भी नहीं रहे हो. आप कितना टाइम ले रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. आदि. नितिन. चलो. यस बेटा नितिन. स्टार्ट. सेकंड अकाउंट. Yeah. Good morning, sir. हाँ. Sir, accumulated सेकंड अकाउंट. depreciation account. हम्म. Accumulated depreciation account, sir. इसमें डेबिट माइनस होएगा, क्रेडिट प्लस होएगा. पहले प्लस बोलिए ना. लाइफ में निगेटिव Yes. थिंग क्यों पहले करनी है? क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. हाँ. बैलेंस बीडी 68,000 और डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1,03,000. लास्ट लाइन पे 1,03,000. हाँ. नेक्स्ट अकाउंट. Yes, sir. नेक्स्ट एडी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया. इन्वेस्टमेंट. Investment अकाउंट टू बी account. ओपन और नॉट? ओपन होएगा सर. हाँ. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. डेबिट बैलेंस 1,15,000. हम्म. क्रेडिट बैलेंस 1,27,000. वेरी गुड. Yes, sir. नेक्स्ट.
शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे लाइन से चलिए ना भाई, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इनडायरेक्ट मेथड अकाउंट, थोड़ी कर रहे, डायरेक्ट मेथड, आई हैव रिटर्न ओवर देयर, ओपन दैट अकाउंट। इन्वेंटरी, विच अकाउंट आई एम गोइंग टू ओपन? इन्वेंट्री सर, लिखा है मैंने स्क्रीन पे, यू कैन सी ओवर देयर। आप स्क्रीन पे छोड़ के ट्रेडिंग सब अकाउंट, जगह पे देखते हो। ट्रेडिंग अकाउंट सर। ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। हाँ, ये सर ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000। टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डज नॉट हैव एनी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। We have two opening stock एक and by लाख closing stock. So this is a new thing. This is a difference between direct and indirect. Direct method में we open inventory account. Indirect method में we take only difference of current assets and current liability. Got the concept? यस सर। हाँ. So opening stock how much? ओपनिंग स्टॉक 1,44,000, 10,000, 10,000 सर, 1 लाख। पूरा किया हुआ पानी. If you write wrong amount in wrong account, 100% mistake. 1,44,000 क्लोजिंग बैलेंस सर। 1,44,000. Next. नेक्स्ट सर, Next प्रीपेड account is, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, trade receivable means debtors. यस सर। Which balance? डेबिट बैलेंस सर 15,000, 55,000। अब क्यों उल्टा ऐसे कर रहे हो, कुछ तो अलग। 55,000 यस सर। and here it is two balance brought down. No, 7,000, this is first time you are opening. That's why I'm writing heads. By balance carried down. 47,000। Cash. केस अकाउंट सर। Cash account open करना है. Have you नहीं सर, taken that 31,000 as a total difference? No. Why there is need to open cash account? नो नीड सर। No need. We have already written in cash at beginning and cash at the end. Net increase or decrease in cash and cash equivalent is 31,000. यस सर। So why there is need to open cash account? स्टार मार्क किया था क्या मैंने कैश अकाउंट को? नो सर। नो. नेक्स्ट इज प्रीपेड prepaid expenses, but instead of prepaid expenses, open in expense account. Which account? एक्सपेंस अकाउंट। Expense account pro forma. Prepaid is debit side, no? यस सर। So to prepaid, buy prepaid, बाय प्रीपेड। and buy outstanding, to outstanding. Outstanding liability is also there. यस सर। Understood the pro forma? यस सर। To prepaid, last line buy prepaid, and buy outstanding, to outstanding. आउटस्टैंडिंग So prepaid, how much? 5,000। बाय प्रीपेड 1,000। 1,000. Very good. Share capital. Have you opened a pro forma account? यस सर। Hmm. क्रेडिट प्लस नया डेबिट माइनस। Are you also doing it? No? Rub page पे. यस सर। Hmm. 1,15,000, 4,65,000 Why? डेबिट बैलेंस सर। Why? सर Are we क्रेडिट, open 3,15,000 by balance brought down and 4,65,000? What are you doing? कर क्या रहे हो आप? Why are you taking difference? सर आप डिफरेंस क्यों ले रहे हो नितिन जी? सर डिफरेंस नहीं, डेबिट बैलेंस बोल रहा था 4,65,000। अच्छा, डेबिट. अच्छा, लास्ट लाइन डेबिट साइड ऐसा बोलिए, फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड बोलिए. पहले फर्स्ट लाइन बोलिए, फिर लास्ट लाइन बोलिए. ओके. ओके सर। हाँ, पर आपने तो डिफरेंस लिया वन कुछ तो. 4,65,000 बोला सर। ओके ओके, ठीक है. रिजर्व सरप्लस 8,000, वो तो पी एंड एल का डिफरेंस है ना ये. ये सर रिटेन अर्निंग और डिविडेंड।
हाँ, so retain earning 8,000 over. Yes, sir. हाँ, next. So retain earnings we never open. Bonds. Bonds account. Credit plus debit minus. हाँ, how much? Credit 2,45,000 Hmm. और debit 2,95,000. Hmm. Next, Trade trade payable. payable. करना है ना open? Yes, sir. Trade payable means creditors. Yes. Credit plus debit minus. Yes, sir. Buy balance brought down. Two balance carry down. 43,000 credit balance. 50,000. And outstanding liabilities. Prepaid expenses. Expense account में 9,000 और 12,000 debit. and 12,000 expense account. Yes, sir. Very good. Next, Next income income tax. Income tax account also we opened Yes, in sir. indirect method. Buy payable Credit minus. 3,000 and here it is 5,000 to payable. Correct? Yes, sir. Over. Yes, sir. Over. Now trading and P&L account. Sales. Where to write sales? Trade receivable. Which side? Trade receivable. Debit side. हाँ, entry याद करो. What is the sales entry? Sales entry, sir. Case account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. We are assuming it is a credit sales. Okay, sir. So what is the entry? Debtors to sales. Yes, sir. Correct? Yes. So 6 lakh. debtors to sales. So 6,98,000. Next, trading account, COGS. COGS. Inventory or trade payable. Inventory account. Now in inventory account, we will write by cost of goods sold because goods are going out, no? Yes, sir. तो क्रेडिट साइड जब आता है तब डेबिट साइड वाई सो हियर द प्रोफॉर्मा इज टू परचेसेस गॉट द कॉन्सेप्ट Yes, sir. टू परचेसेस इज द बैलेंसिंग फिगर and we know COGS. What is COGS? 5,20,000. In costing, you already studied this. Purchases calculation by using COGS or from purchases you will calculate COGS. तो costing में ये आपने already किया होगा. Yes, sir. COGS plus closing stock minus opening stock is purchases. And if you want to calculate COGS, तो opening stock plus purchases minus closing stock. Now what are you going to calculate over here? COGS कैलकुलेट करोगे या परचेसेस कैलकुलेट करोगे? सर COGS गिवन है सर. हाँ, तो कैलकुलेट क्या करोगे? परचेसेस. अंडरस्टूड? यस. कॉस्टिंग में किया है ना आपने ये? यस सर, कॉस्टिंग में किया सर. हाँ, एंड ये देखो यहाँ पे बाय परचेसेस आएगा फिर उधर से एंड देन बैलेंसिंग फिगर टू कैश आएगा. टू कैश आएगा. अंडरस्टूड? यस सर. इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस लिखा ना हमने, किसी ने तो भी पूछा है. सो फर्स्ट व्हाट आर यू गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम COGS? परचेस. परचेसेस. एंड फ्रॉम परचेसेस क्रेडिटर अकाउंट में ट्रेड पेबल में सर केस टू कैश आएगा फिर लास्ट में. वी आर इंटरेस्टेड इन पेमेंट एंड रिसीट्स, नो? यस. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बट वेट, 37,000 डेप्रिसिएशन है एंड 1,10,000 एक्सपेंस है. यस सर. सो 1,10,000 वेयर टू राइट? प्रीपेड एक्सपेंसेस. एक्सपेंस अकाउंट. हाँ, क्या लिखो एक्सपेंस अकाउंट में? एक्सपेंस अकाउंट में सर डेबिट साइड. ऑन डेबिट साइड
What is the pro forma on debit side? Income tax में 2 कैश था ना? Yes. 2 कैश है या बाय पी एंड एल है ये? बाय पी एंड एल है और हाँ. 2 में कुछ है. 2 cash will get the balancing figure afterwards. Yes. So where to write 1,10,000 in by Debit side. P&L in expense account? Understood? Yes, sir. Understood. हाँ. And by P&L 1,10,000 and accumulated depreciation में लिखोगे 37,000 by depreciation. We already covered this. Yes, sir. Indirect Indirect. method में किया था. हाँ. Next. What is the next item? Next item, sir. Depreciation. हो गया ना? अभी बार बार क्या लिखना है? 37,000 we have written. No accumulated depreciation में. Yes. Sir. हाँ. Over. Yes, sir. Over. चलो नेक्स्ट, चलो पढ़ते रहो स्क्रीन पे. व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? Interest expenses paid. हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड. नाउ इंटरेस्ट एक्सपेंस accrued भी 23,000 है ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड भी 23,000 है. तो ये पी एंड एल वाला है. पी एंड एल में क्या आता है? एक्रूड. Accrued आता है, सर. हाँ, तो 23,000 accrued and that is only paid because there is no ledger account, no, like income tax. इनकम टैक्स के जैसा इंटरेस्ट पेएबल दिख रहा है क्या आपको? No, sir. नो. सो जितना पी एंड एल में उतना ही पेमेंट हुआ है. वॉट एवर द अमाउंट इन पी एंड एल विल बी द पेमेंट अमाउंट. देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो पेमेंट किधर लिखेंगे फिर? इंटरेस्ट एक्सपेंस विच एक्टिविटी? Sir, credit. और एक्टिविटी कौन सी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? Sir, operating. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Investing. तो पेड इंटरेस्ट पेमेंट भी कौन सी एक्टिविटी होगी? Financing. तो फिर कहां से ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बोल रहे हो आप? Sir, clear, sir. विच एक्टिविटी? Financing. थिंक द बेसिक रूट. नो, व्हाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट. कोई बात नहीं, चलो थोड़ी डांट खाना जरूरी है तो ही थोड़ा सा समझ में आता है. थोड़ा गंभीर ने पहले ही डांट दिया रहता तो परसों की मैच जीत गए Yes, sir. रहते. चलो जाने दीजिए. इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड. Interest income received, sir. Sir, हाँ, अभी विच एक्टिविटी? financing. व्हाई यू विल रिसीव इंटरेस्ट? Sir, operating activity है. अरे भाई, ऑपरेटिंग हम लोग क्या रोज मिला इंटरेस्ट लेके आना अपना बिजनेस है क्या ये? सर, इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट रिसीव होगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब क्या कर रहे हो बेटा नितिन जी? क्यों इतना नर्वस हो गए हो आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भाई. तो ठीक है, आप कल बोलिए. आदिश्री, कोई बात नहीं, इट्स ओके. गुड मॉर्निंग सर. गलत हुआ तो गलत हुआ, नो प्रॉब्लम. हाँ, सो 6,000 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माय डियर. यस सर. नेक्स्ट, gain on sale of investment. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर. How investing activity? Whether I'm going to write gain on sale of investment, where to post this gain on sale of investment? इन्वेस्टमेंट में गेन सर. Investment account में debit side to gain on sale of investment. Same, no? यस 12,000, सर. यस हाँ. सर. And loss on sale of plant? प्लांट Same, अकाउंट. same. Plant account में by loss Loss. 3,000. By loss 3,000. Same like problem number, indirect method. Income tax. सर 7,000. Where to write this? बाय पी एंड एल. Where? गेटिंग. Okay. 7,000 by P&L. And what about dividend paid? Dividend account is not Yes, sir. there, correct?
So whatever dividend accrued in P&L is paid. So I will write 8,000 in financing activity. In financing activity, I will write 8,000. Okay. Correct? Next. Now adjustment. Adjustments has how many effects? 2 effects, sir. Purchase investment for 78,000. How much? 78,000. Second effect. Finance investment activity. Name itself investment account. Still you are saying finance account. Investing, sir. Investing account. Inflow, outflow. Sorry. Purchase investment is inflow या outflow. Outflow, sir. Purchasing is outflow. Yes, sir. Next. Sold investment 1,02,000. Investment accounts my credit side, sir. To invest. Investment account credit side. By cash 1,02,000. Second effect. The investment account. Investment account already we have given by cash. Second Investing activity, sir. investing activity, inflow, outflow. Or inflow, sir. So investment account, cash account debit to investment. So cash account means investing activity. And Yes, to sir. investment account credit side by cash. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Next. Profit or loss we already booked, no? Yes, sir. Profit or loss we already booked. 12,000. Sir. Next. Purchase plant assets for 1,20,000. Plant account में buy to cash. Plant account to cash. Second effect. Sir, operating activities में Plant purchasing of plant is our day-to-day activity. We are purchasing plant daily. no, sir, no, sir. Investing, sir. How you can say this is the daily activity? This is only the reason I'm telling you all of you to answer it in the class. Then only you will realize your mistakes. Yes, sir. Not only you, other students. अरे करो मिस्टेक हो जाएगा थोड़ी डांट खा लोगे इफ यू आर सेइंग अभी कभी भूलेगी नहीं आदिश्री Yes, sir. कि इट इज दी परचेस मीन्स परचेस ऑफ प्लांट इज दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वही खुद हंसेगी खुद के आंसर्स पे आदिश्री व्हाई आर यू डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स ऑल ऑफ यू वो प्राकृति इतने मिस्टेक्स ये प्रजापति जी इतनी मिस्टेक्स Don't know, what sir. happens do you have some fear while answering No, sir. ओके ऐसा कुछ डर लगता है क्या मुझे देख के आपको No, sir. तो फिर क्यों गलत आंसर्स देते हो आप नो प्रॉब्लम चलो ठीक है Little हाउ bit मेनी of एंट्रीज वी पास एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्लांट एसेट्स sir, three and 3 entries first entry sir, accumulated depreciation for close. close accumulated depreciation we close then second entry Sir, plant sale entry, sir. cash to plant and third entry Loss or gain or loss account debit to plant plant loss or gain very good चलो so AD account के which side debit side credit side, sir. AD account debit to plant is the first entry no Yes, sir. तो AD account के which side Sir, credit side. Sir, why debit side. Sorry, sir, debit side. AD debited तो AD account debit to plant Yes, sir. and plant account credit side to by AD Yes, sir. next cash to plant Cash to plant. Yes. how much Sir, 5,000. but where to write Sir, plant account debit side. Like, what is the entry
Cash account debit to plant. तो प्लांट अकाउंट को व्हाट यू हैव डन, क्रेडिट और डेबिट? Debit, sir. अरे रीड प्रॉपरली, कैश Sorry, अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो प्लांट को आपने क्या किया हुआ है, डेबिट दिया है क्या क्रेडिट किया है? credit, sir. तो व्हाई यू हैव टू राइट इट इन डेबिट साइड ऑफ प्लांट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. So by cash we will write in plant account. No. Yes, sir. If plant account is credited, why then write on the debit side? We write it on the credit side only. Yes, sir. And where to give second effect? Finance. Finance. Purchase of plant is investing, Yes, and sale of plant is sir. Yes, financing. sir. Investing. क्या बोलूं मैं? ठीक है, 5,000 is investing activity. What happens I don't know. Loss we already booked. Yes, sir. Loss we already booked. So no need to pass loss entry again. Okay. Issue of bonds against plant and machinery. What is the entry? Plant account debit to bonds, sir. तो प्लांट अकाउंट के which side? Credit debit side, sir. Credit, debit, both. No, sir. Debit side. Debit side, huh? Finally, plant debit. How much? 1 lakh. 1 lakh. What is the problem? I understood. You are not practicing it like this. 1 lakh. And second effect, bonds account credit side, 1 lakh. Understood? Yes, sir. Next, repay bonds. What is the entry? Bonds account debit to bank. Huh? I cannot hear you. Bonds account debit to bank account. हेडफोन निकाल दीजिए. Yes, sir. Bonds account debit to bank account. Bonds account debit to bank account. So bonds के which side? Sir, bonds के debit credit side, sir. Debit side. Bonds account debit to cash means bonds account के debit side. Yes, sir. Why there is a difficulty if bond is debited on debit side? And cash account financing activity. Yes, sir. Inflow or outflow? Sir, inflow. Inflow. Bond sale. Oh, sir, outflow, sir. Bonds to cash. Cash goes out. Goes out. Yes, sir. Cash. Cash debited means cash comes in. Issued shares of 1,50,000. What is the entry? Bank account debit to share capital. Bank account debit to share capital. So bank account debit means financing activity, correct? Yes, sir. And share capital which side? Debit side, sir. What is the entry that you passed? Sir, sorry, sir. Credit side. What is the entry you passed? Bank account debit to share capital. So share capital, what you have done? Sir, credited. Credited. Correct? No? Yes, sir. 1,50,000. Dividend paid. We already returned Yes, sir. over. Yes, sir. Now do one by one accounts. Take a total of plant and machinery. Tell me the amount. Anil ji? Really? Sir, tallied, sir. Tallying, beta? Yes, sir. Do you think, beta, I am pressurizing you? No, sir.
You are answering simple questions in difficult way. I'm just telling you cash account debit to capital. Still capital is credited. Still you are answering capital account is debited. And this is really a very easy question, which is we already solved in the last session. Tallied. Next account, accumulated depreciation. Tallied, sir. Tallied. Are you considering all zeros? No, sir. Now Last you only is tell me investment account. We will do it on Calci. You tell me amounts. What I will take it on Calci. Calci पे मुझे क्या लेना है बताइए. sir 115, 12, and 78. 115 plus 12 plus 78 minus 102 minus 127. 127. 24,000, sir. क्या हुआ टैली क्यों नहीं हो रहा है. समथिंग रिटर्न रॉन्ग बेटा. कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सी आई हैव रिटर्न रॉन्ग. ये इन्होंने रॉन्ग बोला था. Sir, deb investment account 127, sir. हाँ. एंड नो वन टोल्ड मी कि सर आपने रॉन्ग लिखा है. 127 ऑन डेबिट साइड था. नाउ इट्स टैलिंग. Yes, sir. What is purchases amount? 86,000. Hmm? Sorry, sir. Lakh 54,000, sir. How much? 5,54,000. Yes, sir. And where to give second effect? Trade payable. Trade payable. Creditors account by purchases 5,54,000. Correct? Yes, sir. Next. Next account. Trading account over. Trade receivable. What is the balancing figure? We call it as by cash, no? Yes, sir. So what is by cash? 7,06,000. 7,06,000. And collection from debtors is which activity? Sir, डेटर्स से पैसा मिलना ये कौन सी एक्टिविटी होती है. ऑपरेटिंग ना. डेटर्स पैसा yes, देता है रेगुलर पैसा देते हैं ना वो लोग हमें. yes, sir. Yes. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज विच एक्टिविटी. Operating activity. हाउ मच. 7,06,000. नेक्स्ट अकाउंट. एक्सपेंस अकाउंट. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर. Sir, 5,000. डू इट करेक्ट. 1,03,000, sir. देन व्हाई 5,000. Sorry, sir. 1,03,000. विच एक्टिविटी. एक्सपेंसेस पेड. With operating activities, sir. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड. इनफ्लो आउटफ्लो. Outflow, sir. नेक्स्ट. शेयर कैपिटल.
Tallied, sir. Tallied. Bonds. Tallied, sir. Next. Trade payable. $97,000, sir. एक भी अमाउंट करेक्ट नहीं बताया अभी तक. नॉट अ सिंगल अमाउंट. 43,000. This is 5,54,000. 50,000. How much? 5,47,000, sir. Which activity? Paid to The operating creditors. activity, sir. Paid to creditors. 5,47,000. Last. Income tax. $5,000, sir. Without calci you can do it. But ठीक है Yes, sir. चलो. 5,000. But first I will take it total and then income tax paid I will deduct it. Correct? Okay. Yes, sir. Because it has a separate line item. I already explained this. Yes, sir. So what is the operating activity total now? 56,000 minus 5,000. 51,000. Yes, sir. Same answer we got it in indirect, no? Yes, sir. इनकम टैक्स इज रॉन्ग ऐसा बोला गया है. इनकम टैक्स रॉन्ग. रॉन्ग साइड अगेन इट्स उल्टा है. 5,000 एंड 3,000. आई बिलीव ऑन दैट पर्सन. कौन था वो? एंड P&L में कितना गया? 7,000. Nine. So 9,000 is the balancing figure, my dear. कितना बैलेंसिंग फिगर है? 9,000. 9,000. So how much I am getting? 47,000. Are you same answer we got it in indirect method? Yes, sir. 47 पक्का? Yes, sir. 6 minus 78 plus 102 minus 120 plus 5. How much? 85,000 negative. $85,000. हो गया वो. 69,000 last. Yes. I am getting the same answer. What do you think? Normal mistakes that you have done? Sir, while passing the entries, I didn't concentrate on the debit and credit, sir. हाँ. So if bank account debit to share capital, where to give bank account का effect? Sir, investment activities, no, sir. Share capital is financing activity, my dear. Sorry, sir, financing activity. Do one thing. Do one thing. We will play one exercise. Here activity will come first and you have to tell me the answer. Okay, sir. Okay? First one. And whatever, if you are getting the wrong answer, Yes, sir. note down it. Okay? Refund of income tax. Which activity?
That's operating activity. Separate line entry, sir. Only inflow. Sir? It will be inflow. Okay. Refund hai na? Refund. Okay. You are correct. It's operating activity, but inflow. Okay, sir. Next, short-term deposits. The short-term deposits is an investing activity, sir. Deposits we are investing. So it's an investing activity. CC मतलब लोन लिया, कैश क्रेडिट. Cash. It's Sir, like a loan. sir, investing activities. Loan लेना is a investing activity. Sorry, sir, financing, sir. Next, bank OD. Overdraft is like a loan. Loan. Okay, sir, financing activity. You write it somewhere. Yes, sir, I'm Both right. are, you answer it wrong. CC and bank OD. Yes, sir. Tell me over after writing. Yes, sir, I'm over, sir. Next, brokerage paid on purchase of investment. Sir, investing activity. So investment is investing activity. So brokerage is also investing activity. Rent paid. Sir, operating activity. Monthly you are paying it, so operating activity. Underwriting commission. I don't think you will answer this. Underwriting commission. Sir, underwriting commission. Underwriter is a person who will sell our shares and debentures. If you know shares and debentures activity, then underwriting is in the same activity. Sir, financing activity. Very good. Financing activity. It is new for you. You can write it somewhere. Yes, sir. Next. Dividend paid on preference shares. Sir, financing activity. Dividend is financing paid and received is investing. Income tax paid. Sir, separate line. Operating. Operating expenses में less. Operating बोलो ना activity. Yes, sir. Operating expenses. Selling and distribution expenses paid. Sir, operating. Correct. Next. Rent received on property held as investment. Sir, operating. Why operating, my dear? Investing, no, you invested somewhere and Okay. therefore you are receiving rent. Is it your regular day-to-day activity? No, sir. Sir, I thought property is there, no, sir. It was No, like. if you are property dealer, then it will be your activity, operating activity. Okay, sir. If your business is of giving property on rent, Okay, sir. for business, it is not our regular income, no? Okay, sir. Next. Dividend received on shares held as investment. Sir, investing activities, sir. Now you are answering correctly. Manufacturing overheads paid. Sir, operating activity. Office and administrative expenses paid. Sir, operating activity. Interest paid on long-term borrowings. Financing activity, sir. Finally, you are answering properly. Then what happened, Adishri, before? Sir, I was little bit confused, sir. Now confusion gone? Yes, sir. If I read once more, I will get the full clear, sir. Interest received on debentures held as investment. Sir, investing activity. So dividend received, interest received is the investing activity. Okay, Dividend paid, interest paid is the financing activity. This is a conclusion.
Yes, sir. Payment of interest is financing. Receipt of interest is investing. Okay, sir. Sale of patents Printing, sir. is an asset. Yes, Asset sold. yes, sir. Investing activities, sir. Investing activity. Wages and salaries paid. Operating activities. Interim dividend paid. Sir, financing activity. Financing. Interim, final. Interim means in between. Yes, And sir. final dividend is after AGM. But both are financing activities. Cash paid to supplier. Sir, operating. Creditors. Supplier means creditors. Yes, sir. Purchase of goodwill. Asset खरीदा. Yes, sir. Investing activities, sir. Very good. Asset खरीदना बेचना investing activity. Proceeds from sale of investment. Sir, investing activity. Cash purchases. Operating activity. Very good. Now you are quick. Redemption of preference shares. Financing activity. Very good. Purchase of investment. Purchase of investment. Investing activity. Trading commission received. Trading means day to day. The operating activity. Cash receipt from trade receivable operating. Proceeds from trade receivable. Receivable. Sir, operating activity. Proceeds from long-term borrowings. Sir, long-term borrowings is financing activity. Cash sales. Operating. Proceeds from issuance of equity share capital. Our financing activity. Very good. Purchase of machinery. Investing. Easy. कौन से गलत हुए थे? Sir, it's short-term borrowings, cash credit, and bank OD, sir. Okay. Actually, just want to tell you, beta, if you are doing mistakes and if I don't scold you, it will be very difficult in exam. You Yes. can see, though you are aware about the answer, but only one mistake will destroy your whole answer. Yes, sir. And therefore, now see your performance. Previously, beta, you are not able to answer simple question like purchase of investment, sale of investment. You are doing it in the what are mistakes? I will tell you your mistakes, beta. First thing, you are aware about the answer, but you have fear. Yes. Second thing, posting is very difficult for you, but now it is very simple because you know the entry. Now see bank account debit to share capital. Bank account effect, we will give it in the cash flow statement in financing activity because sir. it's a share capital, and share capital credited. So on credit side, right side, we will write by cash. Right. If you focus, you won't make a mistake. Okay, sir. Hardik is the best example. He's very focused person. Okay. Yes, sir. हाँ. And no problem बेटा, you are doing mistakes, it's okay. ये मिस्टेक से ही आप सीखने वाले हो, तो कोई Yes, sir. टेंशन मत लीजिए. दोज प्राकृति जी, बेटा आप फोकस नहीं, आप स्लो हो. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू आर वेरी स्लो. नीतीश जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपको आता सब है, बट यू आर नॉट आंसरिंग इन द प्रॉपर वे कि क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है. यू लॉस्ट समवेयर. ओके, तो वो आपका प्रॉब्लम था. एंड आई होप नाउ दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल फॉर यू, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन, सो डोंट वरी. But at least now you are aware about answers, how to present it. So direct method is easy or indirect method is easy? Sir, indirect. Indirect. Okay. ठीक है. चलो नितिन, आज प्रैक्टिस करना सब लोग. We'll take a break. After break, beta, I'm giving you one problem. You can try it in break. I know you people are now very disciplined. आप पूरा पढ़ाई कर रहे हो because you
यू आर अटेंडिंग दिस क्लासेस फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मतलब अभी तक आपका पेशेंस है. मेनी स्टूडेंट्स दे लीव दिस क्लासेस इन बिटवीन. बोथ आर इजी विथ मी. ओके, थैंक यू बेटा. एक ही मिनट ना बेटा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप लोग ट्राई करोगे, एंड आफ्टर ब्रेक आई एम गोइंग टू टेक दैट. इट्स अ टीवाई के क्वेश्चन एक्चुअली. टीवाई के 10, नहीं 11 यू ट्राई. डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं तो ठीक है, चलो आज 10 सॉल्व करो, परसों 11 करेंगे. टीवाई के 10 विल टेक इट आफ्टर ब्रेक. ओके ओके, ओके चलो सर आदिश्री जी थैंक यू. अशोक जी टेक अ ब्रेक.
illustration 10, not illustration 10, TYK 10. Very simple TYK. Yes. Who wants to answer? New students, beta. Who never answered, beta. It's okay. If you are answering wrong in wrong way, it's okay, beta. At least boost your confidence. तांबेश्वरी नहीं, I don't want नितिन नहीं, हार्दिक नो, दिलीप जी को पूछता हूँ. वेट. अदर स्टूडेंट्स, कसक जी का भी हो गया है. अदर स्टूडेंट्स, दीनानाथ गुप्ता, दिनेश कुमार तो हो गए. गुरमिंदर बेटा, ईशा, जिग्ना, जिंकी, बेटा आंसर दीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना. जिग्ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा? हेलो सर. हाँ. सर कैन आई आंसर? हाँ दिलीप, एक 2 मिनट. जिग्ना का प्रॉब्लम क्या है? करण कुमार, एटलीस्ट बोलिए तो सही. पार्टिसिपेट तो मत कीजिए. ठीक है, यू डोंट वांट टू आंसर, इट्स ओके. बट जिग्ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो तो बता सकते हो आप. मधुकर, मानवी, मानवी बेटा बोलिए. आई एम नॉट वेल टुडे, गुरमिंदर इज सेइंग. बाकी स्टूडेंट्स तो वो भी नहीं बताते. मानवी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलो ठीक है. करण इज सेइंग आई एम आउटसाइड नाउ. अभिषेक का प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू, कांट रेज हैंड. मानवी, नेटवर्क इशू. ओके. जिग्ना, अभी तक रिप्लाई नहीं आया आपका. चलो ठीक है. सो विल स्टार्ट. टीवाई के 10. चलो हार्दिक भाई, बोल दो आज. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चलिए. सर पहले रीड विच कर दो. मेथड बेटा? सर फर्स्ट टेल मी. सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट. व्हाई? सर सेल्स नहीं है, पीएनएल नहीं दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हाँ. नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग पिन. एंड पी एंड एल इज नॉट गिवन. चलो लिखो ऑन क्वेश्चन इटसेल्फ. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल इज नॉट गिवन. Therefore, indirect method. एक ही मिनट. हाँ.
चलिए ओके बेटा. Yes, sir. Hmm. Sir, from the following balance sheet of Grow More Limited, prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2000 X1. सर पर्टिकुलर्स हैं, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 31st March 20x2 और करंट ईयर का दिया हुआ है 31st March 20x1. Last year and current year. Current year, last year, write down. एंड सर बाकी शेयर कैपिटल है. सुनो ना, मैं दिलीप को मौका देता हूँ ओके सर. because he never answered. ओके सर, थैंक यू सर. ओके हार्दिक, थैंक यू बेटा. हार्दिक आपका भी माइक चालू ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. रेज योर हैंड. हाँ, सपोज दिलीप को नहीं आया तो आप बता देना. ओके सर. चलो दिलीप जी. Sir. So what is the first thing what we'll do? Star marks. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Share capital is there, reserve surplus is there, long-term borrowings, trade payable, other current liability, short-term provisions. Provision for tax is mandatory account. Yes, sir. So star mark. Then we have dividend payable under current liability account open karo. Plant and machinery sold. So plant and machinery star mark. So dividend and income tax mandatory account. Yes, sir. And there is no depreciation on land and building. Okay. Okay, sir. So land and building, there is no need to open account. We will directly write it. Correct? Yes, sir. So income tax account we will open, dividend account we will open, and plant and machinery we will open. Correct? Yes, sir. Chali. So how many activities? 3 activities, sir. आवाज आपके इधर है क्या इतना? Sir. आवाज आ रहा है, नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज. Yes, sir. ओके ठीक है, बोलिए. ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Investing activity, financing activity. Can you tell me what is the cash and cash balance? Sir, 2 lakh negative, 2 sir. lakh and 0. So 2 lakh negative. What is the total of this? 2 lakh negative, sir. 2 lakhs negative. Correct? Yes, sir. Dilip ji, there is background noise. So can you mute yourself? Because पूरा इंडिया दिख रहा है. Operating activity, investing activity, financing activity. Yes, negative 2 lakhs is a total. Yes, Hardik. यस सर. चलो start. सर सबसे Share पहले तो capital. सर Is there अकाउंट. any adjustment? यस सर. सर इनफ्लो है सर 2 lakhs को. फाइनेंसिंग एक्टिविटी. There is no adjustment, beta. नहीं सर, सिंगल लाइन आइटम वो सिंगल Ah, है ना, लेकिन single. There is no फाइनेंसिंग. adjustment. So if asset increase, liability decrease, what is the inflow or outflow? सर एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है, तो सर मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो मैं मतलब पे कर रहा हूँ, तो सर आउटफ्लो है सर. Outflow. And liability increases means inflow. इनफ्लो. Okay. Have you written on question? ये चलो लिखो फटाफट. Whatever I am writing, you can write it ओके on सर. question and answer. यस 8 सर. lakhs का 10 lakhs. सर मेरा इनफ्लो हुआ है सर, मेरा कैश अंदर आया, तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस 2 लाख. Should I write everything or it's okay? सर फिगर्स आर इनफ. Okay. Figures are enough. So 2 lakh rupees. प्लस पॉजिटिव. हाँ. Next. सर नेक्स्ट है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सर इट इज फॉर आवर रिटेन्ड टू कैलकुलेशन आवर रिटेन्ड अर्निंग्स.
तो सर रिटेन अर्निंग्स इसमें सर जनरल रिजर्व भी है और साथ में पीएनएल भी है। तो सर पीएनएल जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है सर 40,000 से, और जनरल रिजर्व जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 50,000 से। सो सर 90,000 रिटेन अर्निंग्स। तो कितना 90,000। रिजर्व सरप्लस 90,000 करेक्ट यस एंड व्हाट इज माय P&L बैलेंस इज शोइंग जनरल रिजर्व 1,50,000 का 2 lakhs ओके यस सर and 60,000 का 1 lakh so 90,000 or I can start with 40,000 that is you can directly start retain earnings if you want 90,000 यस or second option that you have you सर can write profit after tax is 50,000 sorry 40,000 40,000 and plus appropriation of in general reserve 50,000 50,000 so you have two options which is better one सर प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है सर, पता नहीं सर कौन so सा। you can start with retain earnings directly ओके सर। you can start with retain earnings directly so first from retain earnings what you will get Sir, retained earnings, we will first deduct the elimination. It is an elimination round. And elimination which will give you sir, operating profit before working capital changes. And sir, then we will operating profit before working capital changes very good sir, then we will change the working capital, apply those effects, and then sir, it will be PBT, and sir cash minus generated from operations operations, and then minus tax, then sir operating profit. less income tax paid Yes sir. correct Yes sir. so from retain earnings I will eliminate something so I will get operating profit before working capital changes this is only understanding pro forma in exam you have different pro forma okay I will show you at the end easy Abhi Yes sir. so retain earnings you started with 90,000. 90,000 chalo next Then sir, we have an adjustment sir. no why are you moving to adjustment 1 over Okay, long term borrowings sir, long-term borrowings, sir, debentures at the end of the year are issued. So, sir, it is an inflow and it is a financing activity. inflow and it is the financing activity again issue of debentures and no interest as it is Sir, given that it is issued at the end sir, लेकिन कोई percentage भी नहीं given. percentage not given so ignore it so you can write note ignore interest paid Okay, sir. trade payable Trade payable, sir, it is our working capital changes, and sir, decreasing or increasing it is decreasing decreasing by sir 1,20,000. so decreasing means here I will write मतलब सर हमने पे करा सर हमारा आउटफ्लो। negative 1,20,000 operating activity में Yes sir. correct Yes sir. next Sir, other current liabilities में है sir dividend payable. dividend payable so we opened account सर डिविडेंड पेबल का सर अकाउंट ओपन होगा सर। सर डिविडेंड पेबल हमारी लाइबिलिटी है सर। by payable बाय to पे payable यस सर। to payable 0 बाय पेबल सर 1 लाख। by payable 1 lakh सर हमने कैश पे करा है इसका मतलब। so dividend account over no we will do that afterwards better not now ओके सर। first we will post all these things ओके सर। सर इनकम टैक्स सर प्रोविजन है सर। next is income tax प्रोविजन है सर। तो सर क्रेडिट साइड प्लस होगा और डेबिट साइड no माइनस। don't open provision account open income tax account only ओके by सर। payable and to payable सर तो फिर सर यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो सर है पेड का, तो इसका मतलब हमने कैश पे करा है सर। तो afterwards line by line 50,000 एंड सर 1 लाख। 50,000 सॉरी 70,000 एंड 1 लाख, सॉरी सर 70,000। 70,000 line by line beta ओके सर। okay so we'll Yes. do that adjustment afterwards not now ओके सर। we'll post everything first ओके सर। sequence है okay यस सर। short term provisions over डन next सर।
सर एसेट्स में सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर अकाउंट ओपन होगा हम्म सर बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7 लाख हम्म देन सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स Wait, land and building. लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 Don't लाख open account. Why there is no adjustment? सर परचेज का एडजस्टमेंट है सर हाँ, 2 lakhs directly इन्वेस्ट investing activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज Land and building का building. Next. सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज Outflow है outflow. यस सर आउटफ्लो परचेज मैंने बोला सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर परचेज है सर ये भी 0 का 1 lakh. यस सर आउटफ्लो है सर हमने खरीदा Outflow. यस सर देन 1 सर lakh outflow. यस करंट एसेट्स सर इन्वेंट्रीज भी सर हमने परचेज करा है सर 2 लाख से 4 लाख तो सर 2 लाख आउटफ्लो Outflow. ट्रेड रिसीवेबल्स सर हमें मिला है सर Decreases. यस सर 7 लाख से 5 लाख 2 लाख हमें मिला सर तो प्लस Inflow. इनफ्लो देन सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर वो तो Negative. हमारा बैलेंसिंग फिगर है Over. यस सर Now. Depreciation 25% on. ओपनिंग वैल्यू है सर मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन पर हमने दिया ये डेप्रिसिएशन So come to. हाँ. Now accumulated depreciation is open or not open? सर नहीं ओपन हुआ तो इसका मतलब सर प्लांट So एंड it means मशीन it is shown at WDV. यस सर It is shown after depreciation. So depreciation, we'll write it in plant and machinery only. यस सर So 25% into 5 lakhs. सर 1,25,000 1,25,000. Where to give second effect? सर सेकंड इफेक्ट सर ऑपरेटिंग में जाएगा Elimination round. एलिमिनेशन राउंड में सर उसको हमने ऐड बैक कर देंगे सर क्योंकि हमारे Depreciation कितना था? 1,25,000 Add back. 1,25,000. Got this? यस सर Next. सर उसके बाद सर सेल हुआ है सर By And cash. बाय कैश Costing is important or written down value is important? सर इसमें तो सर कॉस्टिंग सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा हाँ, costing is not important to confuse us. You can write over there TCU. TCU means to confuse us because we are not maintaining accumulated depreciation account. Or यदि we are not maintaining accumulated depreciation account, then cost is not important. Written down value 20,000. This is a book value. Book value 20,000, and you sold it for. सर सोल्ड इट फॉर 35,000 So you are in profit or loss. सर प्रॉफिट 15,000 So buy cash, and where to write profit on sale? टू पीएनएल प्रॉफिट To profit on sale. How much? 15,000 15,000. Buy cash का second effect. Which activity? सर बाय कैश सेकंड इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी So investing activity में plant. सर प्लस कर देंगे How much? 35,000. 35,000 And gain operating activity में से minus. नेगेटिव होगा सर -15,000 Gain minus 15,000. यस Gain elimination round में जाएगा 15,000. Second adjustment over. यस सर डन 50,000 paid towards income tax. सर हमने पे करा तो सर कैश से To जाएगा cash. कितना? 50,000 And second effect? सर पीएनएल अक्रूव हाँ, P&L. To cash का second effect? टू कैश का सेकंड इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल माइनस Separate head. यस सर Income tax paid 50,000. सॉरी सर चलो, Yes, sir. close now each and every account. सर डिविडेंड Over पे now adjustments. हाँ. यस सर बाकी सर वो डेप्रिसिएशन के लिए मना करे लैंड एंड To cash सर टू कैश 1 लाख 1 lakh. Which activity? फाइनेंसिंग एक्टिविटी Dividend paid 1 lakh. यस Income tax by सर बाय पीएनएल अक्रूव P&L. 150 minus 70. सर 80,000 80,000. Where is second effect? सर वो एलिमिनेशन राउंड में जो था Elimination round में ऐड कर देंगे सर add कर देंगे. Very good. Income tax 80,000. यस सर
तो सर And what is the next account? सर प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर 700 plus 35 plus 125 minus 500 minus 15. 3,45,000. 3,45,000 to cash. यस सर परचेज कर. To cash means investing activity. यस सर 3 lakh 45,000. negative. यस. Over. हाँ जी सर. Now I will take 90 plus 125 minus 15 plus 80. So what is operating profit before working capital changes? सर 2,80,000. 2,80,000 minus 120 minus 200 plus 200. सर 160. 1,60,000. And what is the final figure? सर -50,000 1,10,000. 1,10,000. Investing का total सर -3,45,000 -1 lakh -2 lakh +35,000 6,10,000 negative. 6,10,000 negative. And what is the total? सर ये तो 3 lakh 3 positive. lakh. See, 3 lakh plus 1,10,000 minus 6,10,000. 2 lakhs आया क्या total? Negative? Yes सर 2 lakh Yes. negative. So our cash flow statement tallies. Yes sir. Understood how to solve? Yes sir. अभी आंसर देखते हैं. We will see study mat का presentation and then I will show you my presentation. Yes sir. Easy लगा बेटा आपको? सर इनडायरेक्ट इजी है, डायरेक्ट थोड़ा सा. Direct is also easy. You just have to open debtors, creditors, trading account, expense account. ओके सर. Nothing is difficult बेटा. सर क्योंकि कल ट्राई करने की कोशिश करी थी सर, निकला नहीं सर. आज फिर करूंगा सर. आज आ गया ना? यस सर आज आ गया सर. सर वो डबल इफेक्ट दो वाला अकाउंट्स का ना, वो समझ में नहीं आया था, अब आ गया. See, इंस्टीट्यूट ने 40,000 increase in balance in P&L and 50,000 they have given separately. और मैंने कितना लिया? 90,000 रिटेन अर्निंग्स. 90,000. You can check here. 90,000. सर. Okay. मैट में आपको P&L and general reserve separately given. Depreciation 125. यस सर. Add back यस सर. 125 add back. यस सर. Gain less माइनस 15,000. And provision for tax 80,000. So we are getting same operating profit before working capital changes. 2,80,000. Say yes or no. यस सर. Now inventory minus 120 minus 200 and plus 200. जो भी होगा. So working capital changes. So I got same cash generated from operations. यस सर. Less income tax paid 1,10,000. Correct है? यस सर करेक्ट है. Investing activity minus 6,10,000. We are getting same amount. And financing activity 3 lakhs. And finally net increase or decrease in cash and cash equivalent at the beginning and cash equivalent at the end. So we are getting same figures, but how to present in exam? Now my presentation. See, I started with P&L, return earning लिखा है जल्दी से, profit and loss account. Then general reserve I have written separately. Depreciation, income tax, gain on sale. Same presentation I have done. Building. Okay. 2 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Yes. Same answer we are getting. I open dividend account. This is your working note 1.
2, 3. Understood? Yes, sir. Easy था? Yes, sir. One more question you can do. Okay, sir. हाँ. Weightage for this chapter is almost 10 marks, beta. Very simple. 10 मार्क का वेटेज है. ठीक है? Okay, sir. देखो अभी. यस, थैंक यू. Thank you, sir. बेटा यही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं वापस से बोल रहा हूँ. आई एम टेकिंग अ क्विक रिवीजन थ्रू ब्रांचेस. तो जिनको भी एक महीने में कंप्लीट करना है वो कल से ज्वाइन कर लीजिए एंड स्पीक इन द क्लास लाउडली. तो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. जिनको भी ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है फॉर नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर्स, तो कॉस्टिंग में आप लोग कल से ज्वाइन कर लेना. तो कल से एक महीने की दोपहर को बैच होगी 2 to 5 एंड बैच विल बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश. तो इंग्लिश में बैच रहेगा. ओके. सो दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड स्टूडेंट बेटा कैन कॉन्टैक्ट अवर ब्रांच. सिर्फ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए वी आर ऑल्सो रनिंग सम एक्टिविटीज फॉर योर बेनिफिट. तो जो भी स्टूडेंट्स, हाँ, बट स्लाइटली अमाउंट यू हैव टू पे टू द ब्रांच, नॉट टू मी, बिकॉज दे आर पेइंग मी सम रेम्यूनरेशन. तो उसके लिए दे हैव ऑल्सो कॉस्ट फॉर रनिंग दिस एक्टिविटी. तो बहुत कम फीस रहेगी. इट्स नाम मात्र फीस है. तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट. तो ये आपके फायदे के लिए होगा. और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए मेनी स्टूडेंट्स की जो मेरे से बात करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू इंप्रूव देयर कॉन्फिडेंस इन कॉस्टिंग, अभी टाइम है आपके पास. यू हैव 3 months. तो आप उसका फायदा उठाइए. मतलब इफ यू वांट. ओके. सपोज आपको अच्छे से समझाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर. और यदि आपको लगता है नहीं मेरा क्विक रिवीजन हो जाएगा सर के साथ, तो यू कैन टेक अ बेनिफिट. तो कल से दोपहर को हम लोग 2 से 5 मिलेंगे. ठीक है. सो we'll do one more question. एक लास्ट क्वेश्चन विल डू. Who wants to answer? Other student please take 13 13 13. पीवाई के 13 बोल रही है रश्मि. चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पीवाई के 13. अदर देन रश्मि हु वांट्स टू आंसर? अरे गलत करो कोई दिक्कत नहीं है. सानिया चलो. वेरी गुड बेटा. यस. Good morning, sir. यस बेटा गुड मॉर्निंग. तो सानिया जी, Yes, sir. here one extra line is there. Can you tell me return earnings of this question? Current year, Sir, last year. opening balance Sorry, 26 lakh उल्टा 50 लिखा. thousand. उल्टा लिखा. Last year, current year. Last year is first. हाँ. Opening balance 26 lakh 50 thousand. Closing balance 36 lakh 90,000. What is return earning? 10 lakh 40,000. Very good. You can write like this. Return earnings 10,40,000. Sir. But what is your net profit? Sir, यही है. 10,40,000. Yes, sir. Correct? Yes, So sir. your return earnings is also 10,50,000, 40,000, and your return earnings and net profit are same. Therefore, no dividend is declared during the year because your net profit is similar to return earnings. It's not like that 16,000 or 8,000. So 8,000 is dividend declared था ना? Illustration 6. Yes, sir. But here, whatever profit you earned is your Retained earning.
Got the concept? Yes, sir. Understood? No dividend is declared. Next. And trade receivable rupees 2,30,000 were determined to be worthless and were written off against the provision for Doubtful debts. doubtful debts. तो इसका क्या करेंगे बेटा? Sir, no cash flow. Ignore. Ignore. I will give you two ways. One way, ignore it. एक वे क्या है? Ignore करना है. Ignore करना है. Because indirect method. So Yes, indirect sir. method में this is no use. We take only difference. We take only difference of debtors. Balances. Correct? Debtors. Yes, sir. Yes. And there is no adjustment related to plant and machinery also except depreciation. Correct? Yes, sir. हाँ. सबसे पहले क्या करेंगे? Now you only tell me. What I will write? OA, IA, FA. In OA, what I am going to write? So net profit. Net profit Will be or put retained there. earnings. Then, Elimination. which will give me Operating profit before working capital changes. hmm, Then change in working capital. Cash flow from operations. yes, cash generated from operations. Cash generated from operations. What is my net profit? 10,40,000. That I will do later on. Correct? Yes, sir. Chalo. So now line by line. Share capital. No change. No change. Reserves and surplus. 10,40,000 net profit. Next. Long-term borrowings. 9% debentures issued at the end. At the end. So 9 So, lakh will be financing activity. Inflow or outflow? Inflow. Asset decrease, liability increase. Inflow. Asset increase, liability decrease, outflow. Say yes or no. Yes, sir. So liabilities is increasing, no? So यहाँ पे वो concept नहीं लगेगा. लगेगा ना? So Account is not open, then beta you have to take difference. long term borrowing. हाँ, 0 का 9 lakhs हुआ तो liability increasing, inflow. Inflow. Yes, sir. हाँ, लगेगा ना concept. 9 lakhs. So every time you have to write this. Below question, above question, inflow, outflow. Okay, sir. Or sir, there is no adjustment for interest because the debentures are Debentures are issued. issued at the end, so no interest adjustment. Next. Short-term borrowings. Increases or decreases? Increase in liability by 1,50,000. Inflow. So it is inflow in operating. Financing activity. Borrowings. Bank loan. Trade payable decreases. So outflow 60,000. Outflow 60,000. Where? Operating activity. Working capital changes. Next. Other current liability. Other current liabilities decrease. No. First dividend payable hai. So dividend account you have to open. Compulsory. Check it. No note is there. So dividend account में क्या लिखूं? Sir, dividend payable paid during the year 1 lakh. By payable 1,50,000. No To payable 0. First write it. Posting you have to do. Again same mistake Hardik and you are doing. First do posting and then we will see adjustment. Line by line. सानिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ.
So dividend payable over and liability for expenses 330 का 270. 60,000 decreases. Inflow Sir, or outflow? outflow in working capital change. Very good. 60,000 for outstanding expenses. Liability for expenses. Next account. Property, plant and equipment. Property, plant and equipment. We will open this account. Yes, sir. Accumulated Sir, depreciation, no need to open it. We will do directly WDV. Plant and machinery at written down value. WDV. You have to do both options, huh? Or you will open plant and machinery at cost and accumulated depreciation separately. Both options are correct. So in first option, what is the amount? Option 1. What is the option 1? Opening balance What is the opening balance? 21,20,000. 21,20,000. Closing balance 32,80,000. 32,80,000. And if you go by option 2, Opening balance of plant and machinery 27,30,000. 27,30,000 over here. Closing balance 40,70,000. 40,70,000 here. And Accumulated accumulated depreciation. depreciation. Opening balance 6,10,000. 6,10,000. Closing 7,90,000. 7,90,000. Correct? Yes, sir. Both options are correct. Next. Current investment. बढ़ गया, asset बढ़ गया. Yes, sir. Outflow in working Outflow. capital. No, current investment, investing activity, my dear. 3,20,000. Investing activity, no? Yes, sir. Current investment is investing. Inventory. So decrease in inventory हाँ. by 90,000. Inflow, outflow. Inflow. Inflow, no? Asset decreased. Yes, sir. Last. Trade receivable. 4 lakhs increase. Outflow. 4 lakh, na? Yes, sir. And option 2. ठीक है, option 2 मैं बाद में बताता हूँ. For trade receivable, option 2 I will show you afterwards. ठीक है? Okay, sir. Now tell me. Cash and cash equivalent. So this total will be 0. Yes, sir. And prepaid expenses 90 का 120 हो गया. Increase. Increase means outflow, inflow. Inflow. Sorry, outflow. We paid. Asset increase means outflow. You can talk to yourself. Asset increase मतलब खरीदा तो outflow. Adjustment. Depreciation. In first option, where to write depreciation? In credit side of PP. By depreciation, how much? 1,80,000. Second effect. In second option. Second effect. Elimination Sir, round. 2 effects. Add back. How much? 1,80,000. Understood? Yes, sir. 2 effects you have to give. Second option. Accumulated Sorry, depreciation you will write over here. By depreciation. By depreciation. Got this? Yes, sir. And second effect, elimination round. Same thing. Yes, sir. Now option 2 से भी elimination round में only I have written once. Yes, sir. Because both options में 180 लिखना है. Okay, trade receivable we'll ignore it. Now tell me. Now one by one account close कीजिए. Dividend account.
So 1,50,000 balance to paid. Cash bank. cash. To cash 1,50,000. Payable nahi, to cash. And where to give second effect? Financing activity outflow. Outflow. Plant and machinery balancing figure. ₹13,40,000. It's to cash, no? Yes, sir. So which Purchase. activity? Investing activity outflow. Outflow 13,40,000. And you can see option 2 may be, first we will close accumulated depreciation. What is the balance? Sub tallied. Tallied. And what is the balancing figure of this? So 13,40,000. To cash. So same figure you are getting under two options. Yes, sir. हाँ नहीं तो इधर आपका नंबर 1, नंबर 2 और बैलेंसिंग फिगर विल बी सेम. नंबर 3. Okay, number 1 0, इधर भी 0, means there is no cancellation of accumulated depreciation and purchase. Understood? Yes, sir. So if you go by option 1, it is also giving you 13,40,000. If you go by option 2, it is also giving you 13,40,000. अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. Now over. चलो. Tell me operating profit before working capital changes. 12,20,000. $7,60,000. Negative 16,60,000. 9 lakhs. 0. 0. 7,60,000, 1660, negative and 9 lakhs. कौन सा था ये टीवाई के? The 12. 13 था शायद से. So 13. See 760. Understood? Yes, sir. Presentation understood, beta? You started with net profit, only one item of depreciation, then changes in working capital, then cash generated from operation, income tax paid is 0, net cash flow, then cash flow from investing and cash flow from financing. Same answer? Yes, sir. हाँ. अभी I want to explain you one more concept. If I open debtors account, and provision for doubtful debts account, it's similar to plant and machinery and provision for doubtful debts. It's similar to plant and machinery and Accumulated depreciation. accumulated depreciation. So debtors में मैं कितना लिखूंगा? Two balance brought down, 23,90,000, 28,30,000. Say yes or Sir. no? Yes, sir. And 1,50,000 credit side and 1,90,000. Correct? Yes, sir. Now what is the actual bad debts? 2,30,000. So I will write over here like two plant and machinery, I will write two debtors. Correct है? Yes, sir. कितना लिखूंगा? 2,30,000. हाँ, two debtors, 30,000. हाँ, this is actual bad debts. So my debtors is also decreasing by provision 2,30,000. Got the concept? Yes, sir. Now tell me what is the balancing figure? This is by P&L. Balancing figure by P&L. जैसे by depreciation लिखते हैं तो by P&L. 2,70,000. 70,000. And what is debtors balancing figure? 6,70,000. Increase in debtors. Increase in debtors, no? Yes, sir.
by 6,70,000. So I will show 6,70,000 debtors as negative figure, and P&L में I will add back 2,70,000. P&L में I add back 2,70,000. so 670 and 270 means my presentation will get change. My presentation will get Changed. change. So what I will do, my presentation is like 670 minus 670 plus 270. Ultimate effect 4 lakh 4 outflow. lakhs. So instead of writing increase in trade receivable 4 lakhs, I will write in adjustment provision for bad debts. How much? 270, 3,000. and negative I will write 6 lakhs. 6 lakh So 70. ultimately figure will be minus 4,70,000. Sorry, 6,70,000. What I will do here, instead of 4 lakh, I will write 6,70,000 negative figure. So ultimate effect is 4 lakhs. So which one is better? Sir, first one is better. फर्स्ट वाला इजी है ना ज्यादा, वो मुझे पता है. फर्स्ट वन इज मोर इजी. स्टडी मैट में क्या किया है एक बार चेक कर लेते हैं. What we have done in this study mat. This is illustration number 13. See, study mat में 270 they have written separately. तो नीचे कितना लिखा होगा? 670 outflow. 670 out. See, less 670 out. और मैंने क्या किया? Directly I have considered 4 lakh. 4 lakhs. So why institute has done this adjustment? Understood? Yes, sir. आंसर पढ़ के समझेगा नहीं है. आंसर पढ़ के समझेगा नहीं. ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली ले सकते हो. इंस्टीट्यूट ने भी लिख दिया है. रीड दिस एडजस्टमेंट. Bad debts amounting to rupees 2,30,000 were written off against provision for doubtful debts So account. this is 2,30,000 we have written off, means two debtors. Correct? Yes, sir. हाँ. In the above solution, bad debts have been added back in the balances of provision for doubtful debts and trade receivables as on 31st March 20x1. तो हमने इधर लिखा और डेटर्स में भी लिख दिया ना 230. हाँ. Yes, sir. Alternatively, the adjustment of writing of bad debts may be ignored and the solution can be given on the basis of figures of trade receivables and provision for doubtful debts as appearing in the balance sheet on 31st March मतलब 20x1. डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर का डिफरेंस ले सकते हो 4 lakhs. कौन सा sir. इजी है? So both are easy. Okay. These accounts you understood option 2? Yes, sir. Okay. रश्मि जी, यस सर. कौन से ऑप्शन से जाना पसंद करोगे आप? सर फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन डिफिकल्ट है? यस सर, यही मुझे इंस्टीट्यूट का आंसर समझ में नहीं आ रहा था. नहीं, अभी भी नहीं समझा? नहीं सर, दोनों बोथ समझ में आ गया. थैंक यू सर. Both ways understood? यस सर, क्लियरली. Yes. So both ways are. This is similar to your which account? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. Same. So instead of two asset, we have written two debtors and by provision. Correct? And by depreciation के बदले में by P&L. यस By सर, P&L. पहले बनाई थी पर मेरे को ये लगता था इधर डेप्रिसिएशन डेबिट साइड लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं इधर डाल देती थी, फिर आ ही नहीं रहा था. Both answers are correct, Anil ji. So you can Yes. take directly 4 lakhs or you can take minus 670 plus 270. Okay? यस सर, एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन इज. You are, but suppose by using two different methods, you are operating profit before working. सर इसमें हम डायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं. नहीं, direct method, how is it possible? Do you have sales figure? नो सर. Do you have COGS figure? Do you have purchase figure? नो Do you सर. have expenses figure? No, there's no direct method. और समझे? सर एक मुझे डाउट है, क्लियर वो
जो डिविडेंड पे ऐड हो रहा है, जो लाइबिलिटीज है नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल हमारा लाइबिलिटीज तो लेस हो जा रहा है, तो तो हम बाय उसे पेबल वर्किंग यू कैपिटल में क्यों नहीं शो कर रहे हैं? किसमें? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। Why we will show dividend account? Dividend is which item? सर वो डिक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। No, अदर no, no. Which dividend is which type of item? फाइनेंसिंग। Financing. Then why are you do want? Why do you want to show it in the operating activity? Is it working capital changes? यस, नो। No, it is not a part of working capital changes. It is a यस। part of financing activity. And why we open income tax account? Because income tax is also not a part of working capital changes. Income tax is a separate head. That's why we open income tax account also. यस सर। थैंक Okay. यू। ओके Yes. सर। So friends, now today's homework. हाँ जी बेटा, questions always. Yes बेटा, हाँ तांबेश्वरी जी बोलिए. सर इन प्रीवियस चैप्टर सर टीवाई के 10 के अंदर सर ये लिखा है कि नॉट रिक्वायर्ड टू गिव 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 प्रीवियस ईयर फिगर, मतलब कि सर एक क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी ऐसा है, इसके अंदर भी ऐसा है, तो सर पता कैसे चलेगा कि ये क्या डिमांड कर रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर के? प्रीवियस ईयर के फिगर्स हम लोग वैसे भी नहीं लिखते ना. नहीं सर, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नीचे कि यू आर सॉरी सर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रीवियस ईयर, लेकिन सर इसके अंदर एक मतलब फिगर मांगता है कि ये टैली नहीं होता है, तो उसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हाँ सर, फाइनेंशियल देखेंगे स्टेटमेंट देखेंगे, का। डोंट वरी बेटा, हम लोग कर लेंगे वो लास्ट डे पे. अच्छा सर, आफ्टर मतलब कैश बाकी फ्लो. है सर करना, हाँ करना अभी तक बाकी है? कंप्लीट नहीं किया है. अच्छा, वी नहीं सर मैंने स्टार्टेड कैश फ्लो बिकॉज ऑन फ्राइडे हमें 2 दिन थे बीच में, सो रिवीजन के लिए टाइम था. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू प्रॉपर टाइम. कैश फ्लो स्टेटमेंट. We are सर। going to solve यस। that questions. Don't worry. ओके सर, थैंक यू Thank सर। you. Yes. Pooja. Pooja, what is the difficulty? पूजा जी डिफिकल्टी क्या है? सर सर गलती से हो गया। ओके ओके. सर हाँ सर एक एडजस्टमेंट है जिसके अंदर दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे 68,000 एंड नीचे सर उसमें दिया हुआ है कि टीडीएस ऑफ ₹8200 वाज सॉल्व. डिडक्टेड ऑन द अबव नेक्स्ट इंटरेस्ट। सेशन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ओके सर। सेशन में यू ओनली नाउ यू कैन सॉल्व दैट. आप लोग रेफर करो स्टडी मैट के आंसर को एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल आंसर इट. सर ओके. उसके अंदर है ना ग्रोथ दिया हुआ है, जैसे ग्रोथ में पता है ऐड मुझे, करके। पता है मुझे पता है. आई विल आंसर योर क्वेश्चन. तो वही समझ नहीं आ रहा कि वो ग्रोथ में क्यों बताओ, दिया हुआ है, वो हमें बताता मिलता ही नहीं है। बताता हूं मैं. दैट इज अ प्रेजेंटेशन पार्ट. उसमें से टीडीएस वापस से माइनस करके बताया हुआ है. यस। तो दैट इज प्रेजेंटेशन पार्ट. तो वो करेक्ट है सर, मतलब। वो ओके सर। दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई हमें इतना इंटरेस्ट मिला पर हमारा गवर्नमेंट ने टीडीएस भी कट किया. अदरवाइज यू वॉन्ट अंडरस्टैंड नो. ये ओके सर, प्रेजेंटेशन मतलब है वो। वो. आई रिसीव 90 रुपीज ओनली बट मैं 100 - 10 करके बताता हूँ. ओके सर। ठीक है. इट्स टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट्स. सर कौन से क्वेश्चन कंप्लीट किए? हाँ जी सानिया. सर देर इज अनदर नोट इन द सेम क्वेश्चन टीवाई के 13। हम्म हम्म. सो प्लीज एक्सप्लेन। करंट इन्वेस्टमेंट, रीड इट. Current investments may not be readily convertible to a known amount of cash and be So it is subject. not considered as a part of cash and cash equivalent, current investment, but we have taken it as a part of investing activity. तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बेचना इस कैश भी है ना, तुरंत कैश नहीं आने वाला है. सो सम पीपल मे थिंक कि दैट इन्वेस्टमेंट इज अ कैश ओनली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो इंस्टीट्यूट ने ये बता दिया कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट. अंडरस्टूड? Okay, sir. हाँ. टेक अ स्क्रीनशॉट. कौन से क्वेश्चन हुए थे आज? Sir, 10.
नो, उसके पहले डायरेक्ट मेथड। नो, Yes, sir. Illustration 6. इजी गया बेटा आज का सेशन? Yes, क्या sir. हेवी था? हाँ, हाँ, interesting था sir. वापस से एक बार कर लेना लगे तो। सपोज इफ कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर तो अटेंड इट वन मोर टाइम, वॉच इट वन मोर टाइम। सानिया जी डन बोलना, एक सेकंड। हम्म, Done sir. Done sir. Done sir. Done sir. Done sir. कितना था? 6? नो, Yes sir. Done sir. Done sir. कौन सी मेथड थी ये? डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट कौन सा था? टीवाई के? Sir 10. नंबर? Sir याद नहीं है तो. एनीवन? स्क्रीनशॉट नंबर? 8। Done sir. Done sir. ये मत ओपन करना। Done sir. Done sir. Done sir. वो उसके बाद TYK 13. Done sir. Done sir. सॉरी, इधर मेरा गलत हुआ है। मैंने इन्वेस्टमेंट का पार्ट लिया है। Sir. नो, ये क्या हुआ? ओके, हाँ। Done sir. Done sir. दिस इज 1 2 3। हाँ, हाँ, ओवर। Yes sir. Done sir. चलो, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। और नोट्स यू कैन कॉपी इट फ्रॉम स्टडी मैट। ठीक है, Okay sir. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अशोक जी, ओवर ओवर।